repair. Here my group members are Ariba Kiran, Akhlaq Ahmed, Aruj Anwar, Ihtishamul Haq. Today I'm here to present DNA repair. Next. DNA repair is a collection of processes by which a cell identifies and corrects damage to DNA molecules that encode its genome. Many of these lesions cause structural damage to DNA molecule and can alter or eliminate the cell ability. The genetic information encoded in the DNA has to remain. Excuse me, ma'am. मैम लास्ट वन नहीं रहने दो फर्स्ट वन सेकंड स्लाइड any chemical change or damage must be corrected. If not repaired the damaged DNA, then the result of the damaged DNA is causes by the disease and cell death and mutation occurs in the cell. The cellular response to DNA damage include process that deal with its consequences, tolerance and apoptosis. Tolerance is a DNA damage is a apoptosis is a programmed cell death of the DNA of the cell. Tolerance is a process DNA damage bypass or enables DNA replication. DNA repair proteins are often activated or induced when DNA damage. Excessive DNA damage can initiate the apoptosis. Next. DNA damage cause the most damage to DNA is repaired by removal of damaged bases. DM can causes the changes in the structure of the genetic material, prevents the replication mechanism from functioning and performing. DNA damage block transcription information. Instead of DNA is copied into new synthesized molecule of a messenger RNA blueprint for protein synthesis. If the DNA damage exceeds the repair capacity is why DNA damage needs restoration. A cancer cell has mutations that prevent cell death, resulting in loss of cell cycle control and unregulated cell division, which leads to malignant tumors. Rate of DNA repair depends on many included factors: cell type, the age of the cell, and extracellular environmental factors can cause the rate of the DNA damage. The cell has limited amount of time to fix the initial alteration and restore the DNA to its normal sequences. Before the replication converts the alteration into a mutation that will pass on the next generation, DNA bases can be damaged by the loss of bases. Next. Agents that damage the DNA. Organisms are permanently exposed. Exogenous and endogenous agents that damage DNA. Here we discuss about the radiations. Hello, Ariba, आप continue करें इस slide से जहाँ से मैंने start किया. Okay, ma'am. Ma'am, as we have seen that DNA gets damaged sometimes, so there are so many endogenous and exogenous factors that can damage the DNA. And if we say the endogenous factors, so we can say that there are errors in the replication that can serve as the endogenous factors, and exogenous are some environmental factors like radiations or chemicals, etc. In radiations, we can say that the first radiation could be highly reactive oxygen radicals. And these are basically produced in our body as a result of the different sort of biochemical pathways, or we can say the cellular respiratory pathways. Next one is the ionizing radiations, and ionizing radiations may include either they could be the gamma rays or X-rays.
And next one is the ultraviolet rays, which are normally the UV B rays and UVC rays that can damage the DNA. And the other ones are chemicals. Okay, first chemical is aromatic hydrocarbon. These are mostly present in the cigarette smoke. Okay, when we exposed ourselves so much to the cigarette smoke, then our DNA can damage. And the next one is plant and microbial products. And the an important example of the microbial product is aflatoxins, which can be seen in the moldy peanuts. And the next one is the chemicals used in chemotherapy. These are basically the chemicals which are used in chemotherapy for the cancerous patients. Next slide. Okay, this is the visual representation of the same thing. These are the cellular metabolism, like as I have mentioned, that the oxidative radicals are produced as a result of cellular metabolism and the UV light exposure. जब भी DNA बहुत ज़्यादा expose होता है to the UV radiation, so वहाँ पे भी DNA damage cause होती है, ठीक है. और इसकी एक example है कि कहीं पे अल्काइलेशन हो गई है या मिथाइलेशन हो गई है, तो वो भी ड्यू टू द यूवी लाइट एक्सपोजर होती है. उसके अलावा आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं, जैसे गैमा रेज हो जाती है हमारे पास और एक्स रेज हो जाती हैं. और केमिकल एक्सपोजर्स हैं, उसके अलावा रेप्लिकेशन एरर्स हैं, विच आर द एंडोजेनस फैक्टर्स, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर डिफरेंट होते हैं. फर्स्ट इज द सेल साइकिल चेक पॉइंट एक्टिवेशन. अगर जो DNA है वो दैट इज डैमेज्ड, तो द सेल साइकिल कैन नॉट बी प्रोसीड टू द नेक्स्ट फेजेस. और इसके अलावा जो है हमारे पास फिर और एक कॉन्सिक्वेंस एपोप्टोसिस भी होता है, विच इज द टॉलरेंस एंड एपोप्टोसिस. और उसके अलावा फिर द सेल विल स्विच टू द DNA रिपेयर मैकेनिज्म्स, जो कि हमारे पास डिफरेंट हैं फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द DNA डैमेज. मैम नेक्स्ट स्लाइड. Okay, now as the DNA gets damaged, so what could be the indication of the DNA damage? First is the base modifications. Yeah, so as we all know that the DNA is having 4 major nitrogenous bases, which are the adenine, thymine, guanine, and cytosine. So अगर सिंगल बेस अल्ट्रेशन हो गई है DNA के स्ट्रैंड के अंदर, सिंगल बेस अल्ट्रेशन है, ठीक है, वो भी हो सकती है, एंड दैट लीड्स टू द DNA डैमेज. फर्स्ट एग्जांपल इज डीप्यूरिनेशन. डीप्यूरिनेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, उसकी जो है हाइड्रोलिटिक क्लीवेज हो जाता है, और जिसकी वजह से रिमूवल ऑफ द प्यूरिन होता है, आइदर ग्वानिन और एडेनिन. नेक्स्ट वन इज द डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन टू यूरेसिल. ठीक है, अब यूरेसिल जो है इट इज एन अनवांटेड बेस फॉर द DNA. ठीक है, इट इज द बेस ऑफ RNA एंड इट कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ द DNA. सो ये भी यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी आ जाती है. नेक्स्ट वन इज द यहाँ पे एडेनिन जो है उसकी डीएमिनेशन जब भी होती है तो हाइपोजेंथिन बन जाती है. जब जो है एडेनिन की जगह अगर हाइपोजेंथिन आ गई है तो दिस इज द DNA डैमेज. ठीक है, अब ये उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अल्काइलेशन ऑफ बेसिस, जिसकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ग्वानिन है. ठीक है, ग्वानिन जो है उसमें समटाइम्स उसकी अल्काइलेशन होती है एंड द ग्वानिन वुड बी कन्वर्टेड इनटू द मिथाइल ग्वानिन. ठीक है, ये भी एक DNA डैमेज है. उसके बाद ये एक कॉमन है कि इंसर्शन और डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड होती है. कभी कभी किसी भी DNA स्ट्रैंड में अगर इंसर्शन हो गई है या डिलीशन हो गई है तो दैट वुड बी द एबनॉर्मल केस, और वहाँ पे फिर DNA डैमेज जो है वो होगी. उसके बाद है जी बेस एनालॉग इनकॉर्पोरेशन. फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हमारे पास कोई ऐसे एनालॉग हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर हैविंग 100% सिमिलरिटी, 100 नॉट एग्जैक्टली 100% बट सम सिमिलरिटी टू द ओरिजिनल बेसिस. तो वो ओरिजिनल बेस की जगह पे वो आके जो है उनकी इनकॉर्पोरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये DNA डैमेज होता है. और उसके अलावा ये तो थी हमारे पास सिंगल बेस ऑल्ट्रेशंस. उसके अलावा 2 बेस ऑल्ट्रेशन भी हो जाती हैं, जिसमें सम स्ट्रेच ऑफ बेसिस या आइदर यू कैन से द 2 बेस एग्जैक्टली और 3 और 4 बेसिस वो अल्टर्ड हो जाती हैं. ठीक है, जिसमें एक एग्जांपल थायमीन फॉर्मेशन की हो जाती है और दूसरी बाय फंक्शनल अल्काइलेटिंग एजेंट क्रॉस लिंकेजेस हो जाती हैं. ये हमारे पास अल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं जो DNA के अंदर 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट्स के ऊपर क्या करते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्मेशन कर देते हैं. और उन कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्मेशन की वजह से जो वो है ना वो ऊपर अपने ऊपर जो है क्रॉस लिंक कर जाता है, और ये भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है, तो ये भी DNA डैमेज के अंदर आएगा. ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रैंड ब्रेक्स, चेन ब्रेक्स. ठीक है, स्ट्रैंड ब्रेक्स क्योंकि स्ट्रैंड की ब्रेकेज होती है. एहतशाम आप कंटिन्यू करें आगे. जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम. This is Ehtisham Al Haq, and now this is my turn to present the PPT.
फॉर्म्स ऑफ डीएनए डैमेज, इसमें हम पढ़ेंगे कि डीएनए में कितनी टाइप के डैमेज हो सकते हैं। स्ट्रैंड ब्रेक चेन के ओवरऑल स्ट्रैंड ब्रेक कर जाते हैं, इसमें कोई खास चेन ब्रेक कर जाता है। अनाइजिंग रेडिएशन, वो अनाइजिंग रेडिएशन की वजह से हो सकते हैं, जितनी भी रेज आ रहे होते हैं उससे हो सकता है। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ बैकबोन एलिमेंट, यहाँ जो डीएनए होता है उसका जो बैकबोन एलिमेंट है फॉस्फेट शुगर, वो डीनेचर कर जाते हैं। जब वो डीनेचर कर जाते हैं तो अल्टीमेटली न्यूक्लियोटाइड भी डैमेज हो जाता है, तो उससे म्यूटेशन हो सकती है। ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, इसमें किसी बेसिस की जगह फ्री रेडिकल उधर जाके बाइंड हो जाता है, तो जो कम्प्लीमेंट्री बेस होते हैं यू होते हैं तो उसकी प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं होती। क्रॉस लिंकेज बिटवीन बेसिस एंड सेम और अपोजिट स्ट्रैंड, क्रॉस लिंकेज में ये होता है कि फॉर एग्जांपल अपोजिट सेम बेसिस की आपस में बॉन्ड बन जाती है। फॉर एग्जांपल वो सेम स्ट्रैंड में भी हो सकता है और दूसरे अपोजिट स्ट्रैंड में भी हो सकता है, तो ये भी रिजल्ट क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाती है और ये प्रोटीन जीन फर्दर ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेशन इसकी नहीं हो सकती। बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल, इसके अलावा जो क्रॉस लिंकेज हो सकती है, एक तो ये था कि बेसिस के अंदर हो जाता है, तो इसके अलावा कि जो बैकबोन एलिमेंट है प्रोटीन है, शुगर है, फॉस्फेट है, उसके साथ क्रॉस लिंकेज बन जाती है। जब उसके साथ क्रॉस लिंकेज बन जाती है तो ये म्यूटेशन काज हो जाती है और ये जिस प्रोटीन जिस जीन्स के लिए ट्रांसक्राइब कर रही होती है वो फर्दर आके ट्रांसक्राइब नहीं हो सकता। मिसमैचेस, this is on incorrect base and one strand that does not pair correctly with the base and the order that strand। मिस्टेक में क्या होता है, फॉर एग्जांपल डीएनए रेप्लिकेशन हो रही, एक स्ट्रैंड बन गया, दूसरा स्ट्रैंड बन रहा है, ऊपर जो है लेट्स सपोज टी आ गया है, टी की जगह नीचे ए आना है, ए के बजाय कोई जी आ जाता है या सी आ जाता है, तो उस पर से भी म्यूटेशन हो सकती है। नेक्स्ट प्लीज। इत्तेशाम, अगर इंग्लिश को फॉलो करें प्लीज। ठीक है, नजर आ रही है नेक्स्ट रिपेयर स्लाइड? में जी मैडम आप जी ठीक। DNA repair mechanism, here we will see the different mechanism through which the mutated DNA can be repaired, among which major DNA repair pathways are direct damage reversal, mismatch repair, nucleotide excision repair, base excision repair, homologous recombinational repair, and non-homologous enzymes. Direct damage reversal, there are some proteins that are ordered by the some pathways which are come here in the mutated lesion, the mutated site. The DNA repair pathway require a number of protein. The type of lesion will dictate this pathway lies for it. And this mechanism, there are some proteins which are come at the site of lesion where the DNA got mutated by any indigenous or exogenous factor. The type of lesion will dictate which pathway lies for repair. And the type of lesion, it depends on the lesion, whether it is a single base mutation, two base mutation or change, it will dictate that which mechanism will be used for this specific mutation. For example, N-methylguanine really can only be removed by BER, base fusion. For example, there is a example of a mutation that is known as N-methylguaninosity, or how it can be removed. It can be removed by base excision pair is a mechanism. It can remove this type of mutation. Benzopyrene guanidine adduct is only removed by nucleotide excision pair. There is an example of another mutation that can be removed by. This is a diagrammatical presentation of the DNA mutation and the first single strand DNA damage. Here is the only one strand is damaged on the DNA. This is called base excision repair, and it can be repaired by base excision repair. Here you can see that in the 3 to 5 strand there is a mutation caused by radiation. You can see that it is highlighted and the red color. Then is nucleotide removal and replacement. Here the pathway of the nucleotide base excision repair is activated, and it removes the mutated lesion of the DNA. Nucleotide excision pair is used for the bulky attacks. For example, base excision pair was used for only one base mutation, and nucleotide excision pair can be used for any bulky mutation or the mutation caused by a long chain of bases. Bulky attacks, DNA unbinding and repair. For example, the places that got mutated, there is a DNA is unbinded. The mutated basis is removed, and this place is replaced with another
intact or excised or the excess phase that is used for the normal replication. Mismatch repairs can be also be removed through this mechanism. Double-stranded DNA damage. Double-stranded, how it can be removed or how it can be restored. Non-homologous end joining. For example, when DNA is mutated, non-homologous, for example, when the templates or the strands are non-homologous, they are not same to each other, and this way, non-homologous end joining pathway is used for this mutation. But here there is a chances of error-prone repair. but जब ये रिपेयर हो जाते हैं तो फर्दर इसकी चांस होता है कि ये इसमें कोई एरर आ सके, कोई म्यूटेशन इसमें एक्सपेक्टेड होता है. होमोलोगस रिकम्बिनेशन रिपेयर, होमोलोगस डीएनए टेम्पलेट बेस्ड रिपेयर. होमोलोगस रिकम्बिनेशन इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल जिस डीएनए में स्ट्रैंड में म्यूटेशन हो जाती है तो ये जो पाथवे है होमोलोगस ये क्या आ जाता है वहाँ पे रिकम्बिनेशन कर जाता है. फॉर एग्जांपल अपोजिट स्ट्रैंड में या सेम स्ट्रैंड में जिस जगह पे म्यूटेशन होती है उसके लिए स्पेसिफिक जो एग्जैक्ट बेसिस चाहिए होते हैं वो वहाँ पे जाके रिक्रूट कर लेते हैं और इसका तो वो डीएनए रिपेयर हो जाता है. नेक्स्ट प्लीज. Direct damage reversal. The direct damage is simplest repair mechanism. This is one of the simplest mechanism for the use for the DNA repairing. Involve a single polypeptide chain with enzymatic property which bind to a damage and restore the DNA genome to its normal state and a single reaction step. इसमें क्या होता है कि सिंगल पोलीपेप्टाइड चेन होता है जिसकी कुछ एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज होती है वो आ जाता है और जहाँ पे म्यूटेशन हो जाती है वहाँ पे बाइंड कर जाता है और जो डैमेज डीएनए होता है उसको वहाँ पे रिमूव कर देता है और उसके बाद डीएनए जो है वो नॉर्मल अपनी जो मेन पोजीशन होती है जो ओरिजिनल पोजीशन होती है उसके वापस से आ जाता है. और डेलिकेट बेस such as process methyl guanine can be repaired by action of a single protein process methyl guanine DNA methyl transfer is removed the alkyl polypeptide and inscribed by transfer of cysteine. This is another mechanism that is used for mutation and mutated DNA. For example, there is example of a mutation. मैडम उस साइड आगे समझिए. ओके, डायरेक्ट डैमेज रिवर्सल. This is whenever the mutation is caused in the DNA. For example, the mutation, example of a mutation, also methyl guanine can be repaired and can be repaired by single protein, that is methyl guanine DNA methyl transferase. म्यूटेशन फॉर एग्जांपल ऐसी म्यूटेशन हुई है कि बेसिस का कोई अल्काइल ग्रुप अटैच हुआ उसमें जो है बेस के साथ बॉन्ड बना लिया वो आगे फर्दर ट्रांसलेशन या सब्सक्राइब नहीं हो सकता तो वहाँ पे ये एंजाइम आ जाता है और अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लेता है और वह बेस को अल्काइल फ्री कर देता है उसका फर्दर वो आता रिपेयर हो जाता है म्यूटेशन उसके लिए म्यूटेशन रिमूव हो जाती है और ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन जो फर्दर यूज होता है. नेक्स्ट. Direct damage reversal. DNA proteins are able to split polygon of the pyrimidine dimer produced by radiation. There is another mechanism that is called direct damage reversal. Here, the DNA proteins enzyme are used for 4-8 bond of pyrimidine. For example, pyrimidine dimer नहीं होता है ये किस्म की म्यूटेशन है जिसमें pyrimidine आपस में बॉन्ड बना लेते हैं सेम स्ट्रैंड में या जिसका बॉन्ड बना लेते हैं तो वो इस DNA proteins के जरिए वो स्प्लिट कर सकता है. कैसे स्प्लिट करता है? जो pyrimidine का बॉन्ड होता है आपस में ये DNA proteins आके उसको ब्रेक कर जाते हैं. जब वो ब्रेक कर जाते हैं तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं और DNA रिपेयर हो जाते हैं. लेकिन इस एंजाइम की स्पेसिफिसिटी है इट रिक्वायर्ड लाइट. They bind to utilization and the light dependent process that require light 340 to 350 to 450 nanometers and so from light जैसे बहुत reaction को प्रभावित करना. अच्छा स्टॉप करते हैं एहतशाम. हेलो अखलाक आप कंटिन्यू करें आगे. यस मैम आवाज आ रही है मैम? जी ठीक आ रही है.
My name is Akhlaq Ahmed. Our topic of presentation is DNA repair system. Now I will explain about direct damage reversal. बेसिकली यहाँ पे क्या होती है, जब यूवी लाइट जब एक्सपोजर होती है तो पैरामिडीन के दरमियान जो है वो उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, तो डायमर फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से साइक्लोब्यूटेन रिंग स्ट्रक्चर होती है। इंग्लिश प्लीज, जो है इंग्लिश में कर दें प्लीज। Basically, primary dimers form from UV light due to which cyclobutane structures are formed. So, in order to remove these structures, we use energy, that is photoreactive reactivation energy is used to break these cyclobutane ring structures so that the transcription process will continue. Photolysis, DNA photolysis are able to separate covalent bonds of pyrimidine dimers produced by UV radiations. They bind to UV ligands in a light independent process but require light as an energy source for repair. जैसे कि मैंने पहले बताया था, UV are present only in few organisms such as yeast. ये जो है UV are, these are the radiations which are present only in yeast, endonuclease, UVE, UVD, cuts, type of various types of damage key factors. Next slide, please. स्लाइड तो नेक्स्ट कर दी है, मगर आपको अगर फैन चल रहा है तो उसे ऑफ कर दें, बहुत डिस्टॉर्शन आ रही है आवाज। फैन नहीं चल रही मैम, यहाँ सिग्नल का मसला है, तो वो सिग्नल का इशू है और तो कोई नहीं है यहाँ पे। अच्छा चलो फिर करो कंटिन्यू, ठीक है। ओके। Basically, base accession repair system mainly repairs non-bulky regions in which single. If we want to remove just single base pair, then we use this base accession repair system. Basically, ये जो process होती है इसमें DNA glycosylase that which catalyzes the hydrolysis of N-glycosidic bond. N-glycosidic bond is basically present between the sugar and the base pair. So, in order to remove this base pair, we use this enzyme DNA glycosylase. So this enzyme will cut or remove the base from sugar, pentose sugar. DNA damage is exercised as a free bases generating sites of DNA of base loss epironic or apameric site. तो जब उसकी वो हो जाती है, जब उसकी बेस जब उससे रिमूव हो जाती है, तो आफ्टर उसकी बेस की रिमूवल के बाद उसको कहा जाता है एपिरोनिक और पैरामेरिक साइट, बिकॉज इट्स pyrimidine or purine base remove. AP endonuclease produce insertion in duplex DNA as a result of hydrolysis of phosphodiester bond immediately 5 or 3 prime to each AP site. So that AP जो endonucleases होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो DNA जो duplex होती है आपको जो डबल स्ट्रिंगेट होती है उसमें हाइड्रोलाइसिस करती है, जिसके नतीजे में आपको जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होती है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की वहाँ पे लीकेज हो जाती है 5 और 3 प्राइम एंड पे। The riboflavin is then removed from the DNA through the action of specific exonuclease ribophosphodiesterase. Then these ribophosphate backbone is removed. इसको रिमूव किया जाता है DNA से, जो है क्या स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं जिसको एक्सोनुक्लेस डीऑक्सीराइबोफॉस्फोएस्टरेज कहा जाता है। जब उसको रिमूव किया जाता है तो फाइनली एक दफ़ा जो उसकी बेस जो है वो जो कि इम्प्रॉपर जो उसकी वहाँ पे इनकॉर्पोरेशन हुई थी, जब उसको रिमूव किया जाता है तो DNA पोलीमरेज की मदद से जो है वहाँ पे जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसी को इस्तेमाल में लाते हुए आगे न्यू बेस वहाँ पे ऐड किया जाता है और DNA लाइगेज के थ्रू जो है उसको कैटेलाइज करके जो उसकी लाइगेशन की जाती है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जो करेक्ट जो बेस है वहाँ पे अमल में लाया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे होल जो प्रोसेस है वहाँ पे यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले तो एन ग्लाइकोसाइलेज जो रेगुलाइज करता है किसी भी एब्नॉर्मल बेस को, इफ एनी एब्नॉर्मल बेस मींस इफ यूरासिल is added instead of cytosine or any other base is incorporated improperly, then it will recognize that abnormal base, then it will cleave the glycosidic bond between the sugar and the base. After the base is removed, then AP endonuclease that uses these apameric AP sites
it will cleave the phosphodiester bond that is present in the DNA backbone. Then the DNA polymerase will use DNA polymerase will act in 5 to 3 prime and it will add new base in the place of the incorrect base. Then DNA ligase will seal that region so that the correct base pair should be incorporated here. नेक्स्ट स्लाइड में जो है यहाँ पे बेस एक्सेशन रिपेयर the enzyme uracil DNA glycosylase removes the uracil created by spontaneous deamination of cytosine in the DNA. जैसे कि हमने पहले बात की थी, यहाँ पे जो मेनली जो एंजाइम which is DNA glycosylase. So in case if there is any misbearing of uracil instead of cytosine is misplaced, then it will use DNA glycosylase, uracil DNA glycosylase that will remove that uracil and it will add cytosine instead of uracil. And in the nucleus cuts the backbone near the defect as I previously explained. यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, जो बैकबोन होती है उसमें फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होती है उसको ब्रेक करेगा और endonucleus removes a few bases. The defect is filled by the action of DNA polymerase and the strain is rejoined by ligase. फिर उसके बाद DNA polymerase जो है उसको 5 to 3 प्राइम एंड उसकी दोबारा से वो एलिमिनेशन होगी, फिर उसको ligase के जरिए ज्वाइन किया जाएगा. नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन repair system. Nucleoside basically जो nucleotide accession repair system that is used for bulky lesions. Bulky lesions means if there is more than one base pair या more than अगर कोई किसी भी nucleotide के अगर वहाँ पे incorporation हुई है, मिस incorporation हुई है तो उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे किया जाता है, including cyclobutane, pyrimidine dimers and 6,4-pyrimidine phosphate. These are the products, these are the structures which are formed in order if we expose the DNA with UV lights, then अगर UV lights की exposure वहाँ पे हो जाती है तो ये जो cyclobutane pyrimidine dimers जो बनते हैं जो कि cyclic structure है तो उनको जो है रिमूव करने के लिए न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर सिस्टम को यहाँ पे यूज किया जाता है. फिर न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 2 पाथवेज पर शामिल होती हैं. उनमें से एक ग्लोबल जीनोम रिपेयर एंड सेकंड वन इज ट्रांसक्रिप्शन कपल रिपेयर सिस्टम. बेसिकली जो ग्लोबल जीनोम रिपेयर सिस्टम होती है वो क्या कहती है, रिमूव इमेज इन द जीनोम ओवरऑल. बेसिकली इन जीनोम ग्लोबल जीनोम रिपेयर सिस्टम वी रिमूव द न्यूक्लियोटाइड्स the incorporated nucleotides, incorrect nucleotides, both in the coding and the non-coding genome overall. But transcription coupled repair system में हम क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पे जो है हम सिर्फ जस्ट जो फास्टली जो आपकी ट्रांसक्रिप्टिंग जो होती है जस्ट उसी की जो है आप वहाँ पे जो है न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन कर रहे होते हैं. The main difference between these two pathways is differ in how they recognize DNA, but they share the same process for initiation, repair and ligation. ये जो प्रोसेस है इनमें से एक ग्लोबल जीनोम रिपेयर सिस्टम जबकि ट्रांसक्रिप्शन का रिपेयर सिस्टम, दोनों का जो इनका एक तो रिकॉग्निशन सिस्टम इनका डिफरेंट होती है क्योंकि जो जीनोम वो है ग्लोबल रिपेयर सिस्टम होती है वहाँ पे सेवरल सेंसिटिव प्रोटीन्स, डीमेज सेंसिटिव प्रोटीन जिसमें से डीएनए डीमेज बाइंडिंग डीडी जिसे कहा जाता है, एक्सपीसी रेड 23DB, इनको जो है यूज किया जाता है किसी भी वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड अगर इनकॉर्पोरेटेड हुई है कोई गलत तो उसको सेंस करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं. जबकि टीएन जो ट्रांसक्रिप्शन कपल रिपेयर सिस्टम होती है वहाँ पे इस चीज़ की जरूरत नहीं होती. तो जो मेन डिफरेंस है वो इनका रिकॉग्निशन है, लीजन रिकॉग्निशन इन दोनों में डिफरेंस है. जबकि जो होल जो प्रोसेस है आफ्टर रिकॉग्निशन रिमूवल का जो प्रोसेस होती है वो दोनों में सेम नहीं होती. नेक्स्ट स्लाइड में जब हम मैकेनिज्म की बात करेंगे यहाँ पे तो रिप्लेस रीजन्स ऑफ इमेज डीएनए अप टू 30 बेसिस जो इसकी स्पेसिफिसिटी होती है वो तकरीबन होती है 30 बेसिस तक. आप अगर वहाँ पे किस लेंथ में जो है आप कोई मिस वहाँ
मिस इनकॉर्पोरेशन है तो उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। 30 बेसिस तक उसकी स्पेसिफिसिटी होती है। द ऑर्डर असेंबली ऑफ डीएनए प्रोटीन प्रोवाइड्स एन एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स दैट डिस्क्रिमिनेट्स डीएनए फ्रॉम अनडैमेज्ड डीएनए। अब ये जो किस तरह से पता चलेगा कि भाई डीएनए जो है कौन से डीएनए डैमेज्ड है कौन सा अनडैमेज्ड है, तो स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि आपको वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे होते हैं डैमेज को अनडैमेज्ड डीएनए से। जैसे कि अभी मैंने जो प्रोटीन का नाम दिया था डीएनए डैमेज बाइंडिंग प्रोटीन हो गई या XPC 23 और 23B, ये जो प्रोटीन्स होती है ये क्या करते हैं रिलीज होती है, तो ये रिकॉग्निशन के तौर पर वहाँ पे काम करते हैं। In eukaryotic cells, the enzymes cuts between the third and to fifth phosphodiesterone 3' region. यूकैरियोटिक सेल में एंजाइम कट करता है 3 to 5th फॉस्फोडाइस्टर जो बॉन्ड होती है 3' इन पे फ्रॉम लीजन से, और जबकि 5' इन पे जो है उसकी कट होती है समवेयर बिटवीन 21st से जो है 25th के दरमियान होती है। After the strain is removed, it is replaced again by the exact base variant through the action of polymerase. Once the mispaired nitrogenous base is removed, it is replaced by the correct one. Then it is again base paired through the action of DNA polymerase, RNA polymerase. The ends are joined to the existing cell by DNA ligase. DNA ligase जो है वो दोनों जो लिंक बने हुए होते हैं दोनों DNA का एनियम उनको लाइगेज करते कनेक्ट करते हैं। इन E. coli UVRA, UVRB, UVRC इन्वॉल्व इन लीजन रिकॉग्निशन एंड एंडो रिप्लेसमेंट। अब जो लीजन जो रिकॉग्निशन होती है E. coli में जो है वो डिफरेंट यहाँ पे प्रोटीन होते हैं, यहाँ पे UVRA, UVRB, UVRC, ये डिफरेंट प्रोटीन यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे रिकॉग्निशन एंड अनवाइंडिंग यहाँ पे ग्राफिक प्रेजेंटेशन की है। यहाँ पे सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया जाता है फिर उसको अनवाइंड किया जाता है डीएनए के बाद फिर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड एक्सेशन बाय कटिंग टू साइड्स, दोनों साइड्स पे 3' और 5' दोनों साइड पर कट किया जाता है। डिग्रेडेशन ऑफ म्यूटेटेड डीएनए, जो म्यूटेटेड डीएनए है, म्यूटेटेड मींस जो वेरिएंट जो डीएनए है जिसमें चेंजेस आई है उस डीएनए को जो है उसको कट के डिग्रेड किया जाता है और डीएनए पॉलीमरेज की मदद से रीसिंथेसाइज किया जाता है और उसको दोबारा से डीएनए लाइगेज की मदद से एलिगेशन की जाती है, दोबारा से उसको जोड़ा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन कपल NER, nucleotide accession repair proceeds more rapidly in cells whose genes are being actively transcribed on the DNA strand that is serving as the template for transcription. अब न्यूक्लियोटाइड जो एक्सेशन रिपेयर सिस्टम में अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कपल मोस्टली यूज्ड इन दोज genes which are fastly transcribed that is serving as a template for transcription. अब यहाँ पे जी कंटिन्यू करें क्लास। Yes. Nucleotide accession repair process more rapidly in cells whose genes are being actively transcribed for transcription. आगे ट्रांसक्रिप्शन कपल जो NER होता है और ट्रांसक्राइब जो स्ट्रैंड होती है डीएनए उन पे जो है वहाँ पे अगर किसी किस्म की न्यूक्लियोटाइड अगर वहाँ पे इनकरेक्ट इनकॉर्पोरेशन होती है तो उसके रिमूवल के लिए यूज किया जाता है। If RNA polymerase II tracking along the template antisense strand encounters a damaged base, it can reconfigure other proteins to quick. अब आप स्टॉप कर दें। अरूज, हेलो अरूज, आप कंटिन्यू करें आगे से। अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ अरूज अनवर। मैम इसी स्लाइड से कंटिन्यू करूं? न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर ट्रांसक्रिप्शन कपल एंड हो गया ना, जहां से एंड हो रहा है नेक्स्ट से ही करें फिर। RNA polymerase से अच्छा इधर mismatch repair. Bismillahirrahmanirrahim. The mismatch repair system is a repair system that is usually done by the DNA during the replication process. If any mismatch base occur during this process. For this, the DNA that is forming the new daughter strand generally have certain sequences, that is a palinoderm sequence, that are the GATC.
These the adenine within this sequence is generally methylated by the protein that is called by the enzyme that is called the demethylase. So specific protein scans the newly synthesized DNA using this adenine that is methylated within the GATAC sequence as a reference point. So if they come across any mismatch or the small loop that is formed during the replication process, so this GATC endonuclease cuts the strand that is bearing the mutation at the corresponding site that occur within the daughter strand. Because the methylated bases are generally occur in the parent strand, they are not present in the daughter strand, so it becomes very easy for the enzymes to select the mismatch pair within the daughter strand. And after that, the exonucleases digest these strands, digest any mismatch base that is present within the daughter strand through its exonuclease activity. Finally, the base that is removed is filled by the DNA polymerase, and the joints are sealed by the DNA ligases. Mismatch repair system has different kinds of proteins that help in this repair mechanism. First one is the MET-S, MET-L, and the H. First a protein, that is the S protein, that bind to the any mismatch site. After its binding, it will recruit another protein that is the MET-L, and MET-L has the ability to only bind to the methylated DNA. After that, MET-L will recruit another protein that is the H, and this H will cut the mismatch base that is present in the other strand. And finally, DNA polymerase will fill with the right base, and the sides are sealed with the nick. DNA ligases. मैम दूसरे वाला नजर नहीं आ रहा. Excuse me, मैम. Hello. जी क्या नजर नहीं आ रहा? मैम ये थोड़ा सा करते हैं, ये जो दूसरी वाली डायग्राम है. नजर किस तरह नहीं आ रही समझ? वो जो पीछे वाली स्लाइड थी ना उसकी, जिसमें एक में मिथाइलेशन हुई थी और दूसरे में मिथाइलेशन नहीं हुई थी. आपके पास अपने पास अगर फिगर है तो अब एक्सप्लेन कर देना उससे, अगर इधर नजर नहीं भी आ रहा उससे एक्सप्लेन कर देना. फर्स्ट जो पेरेंट स्टैंड है उसमें उन्होंने दिखाया हुआ है कि दैट इज मिथाइलेटेड, वो एडेनिन की पोजीशन पे दैट इज मिथाइलेटेड एट द एडेनिन पोजीशन, एंड द डॉटर स्टैंड इज नॉट. सो हियर अ सिंगल साइड स्ट्रैंड will cut by the endonucleases, and finally the defect will be removed by the exonucleases. So here the space will be formed, and this defect is repaired by the DNA polymerase, and finally they are ligated by the DNA ligase. So next. Then next slide. Up to here we only discuss about the repair mechanism that occur within a single base. It means that there was a problem that was present within the single strand, not in the double strand DNA. So if there problem arises within the double strand of the DNA, there are generally two mechanisms that are present that helps to repair the double strand break within the DNA. First one is the non-homology end joining, and second one is the homology end joining. First one is the non-homology end joining that usually occur when there is a lot of double-stranded breaks within the DNA, and second one is it is the error prone, and third it does not require any kind of the template strand. Here the protein as it is shown in the diagram, Ku70 and 80. Ku70 and the 80 are the two basic proteins that are involved in the non-homology end joining. Ku70 and 80 bind to the double-stranded break on the both sides of the DNA, and they recruit another protein that is called the DNA phosphokinases. These phosphokinases all together undergo the phosphorylation of this complex, so it is very tightly attached with each other. And finally, other proteins combine, and in the last step, another protein that is called the ligase 4 or XRCC4 or XLF will bind to the
this complex. This complex will now, ligase 4 will act as a fork that will push both strands toward close together, and finally these two strands will be ligated together. Ma'am, next. Next, ma'am. Ma'am, next slide. Ma'am. Hello. मैंने नेक्स्ट की है, आपसे आपको शेयर नहीं हो रही है क्या? सॉरी हाँ जी मैम, शायद इंटरनेट अब हो रही है, देखो शायद इंटरनेट वीक था, अब जी हो गया. Okay, and a second one is the process that is called the homologous recombination process. As we already know that the homologous chromosomes are the two pieces of the DNA which carries the same gene. So if there is a double-stranded break within one DNA molecule, so it can resolve, it can repair the double-stranded break using the other homologous chromosome. So here the broken ends are repaired using the information on the intact sister chromatid on the homologous chromosome that have a similar genetic material. So here the two proteins are involved. Here the major process that is involved in the double-stranded break in the homologous recombination is the homologous recombination is utilized. Homologous recombination is generally encoded by the two genes that is known as the BRCA1 and the BRCA2. These two proteins are mainly involved in the homologous and the cell replication process. So if there is any mutation in these two proteins, they will result in certain mutations and the cell will not able to resolve its double-stranded breaks. In some cases, it was shown that the mutation in these two genes result in the formation of the was involved in as a factor for the breast cancer in the woman and the ovarian cancer in the woman as well. Ma'am, आगे. In the next diagram, the double-stranded break repair system is shown in the prokaryotes. Here in the double-stranded break, you can clearly see that above there is one DNA pair and below it is another DNA repair. So first here the major protein that is involved in the recombination is known as the REC-A protein. REC-A protein is basically a recombinase enzyme. So 5' strands are first strings to produce the 3' protruding, and here the REC-A will bind to these protruding single strand site. After they are single-stranded bind, because it will prevent any kind of the endonuclease to react on these DNA strands. And this complex that is formed in the second step is known as the presynaptic filament. It will further perform the stand invariant as it is clearly shown in the third step. It will perform a stand invariant through which the base pair of a single strand with the complementary strand of homologous duplex will form a D loop. Here the DNA polymerase will come and it will extend the further. It will extend further formation of the bases. So after its formation, it will lead to the formation of the top of its DNA. As a result, that the double-stranded break is repaired using the homologous recombination. And most importantly, this type of recombination only occur, a D loop only occur in the prokaryotes, while in eukaryotes it usually occur through holiday junction. SOS repair. SOS repair is the last form of the repair, and it usually occur in the DNA when there is a lot of damage within the DNA due to the ultraviolet radiation. So when the DNA of E. coli cell is heavily damaged by the mutagenic agents or such as the SOS response is generated. So in the SOS response, the whole battery that involve the DNA repair, DNA recombination, and replication proteins are synthesized, because all the cell material are in havoc. So here the subunit of the DNA polymerase V is involved that involve the replication throughout the damaged segments of the template strands. This, however, this SOS repair mechanism is very error prone, because it eliminates the gaps in the newly synthesized strand opposite to the damaged nucleotide in the template strand. That means it does not replace them with the normal nucleotide, it just deletes them. So in doing so, it increases the frequency of the replication error. In next tag, next.
Okay. In the next, the SOS response is generally shown. In the cell, there is a normally inhibition of all the SOS genes because they are not active due to the apron that is known as the lac A apron. So when there is too much damage by the ultraviolet radiation, REC A system is activated that cleaves the LEX A. LEX A apron. So as the LEX A apron is autocleavage, all the SOS genes are activated. As the result, the DNA damage repairs and all the mechanisms that are involved in the DNA repair systems are activated. So they are converted from the normal to the filament cells. And next. So here is the DNA repair and the cell cycle checkpoints. As we already know that there are certain kind of the 4 main phases, that is G0, G1, SM and G2, that are essential to order proliferation of the cell. So these all processes are highly regulated and there are checkpoint at each of these specific cell cycle. So therefore, these checkpoints are critical to respond to the DNA damage and to repairing. If these checkpoints are in a case broken down, it may cause more DNA damage. So it also prevent certain effects. It also prevents the mutation effects of DNA damage as well. Next. And then next. Okay, these are certain diseases. First one is the ataxia. This involves the impaired organ development, and second is the Bloom syndrome. This involves the mutation within the DNA due to which the head is small, lungs are not properly developed. Conkia syndrome. In Conkia syndrome, the growth failure and the hearing loss, hair is lost, and there is a photosensitivity, and it is associated with the groups of the other disorders as well. Then is the tricordio dystrophy. It includes very brittle hairs, rough skin, and photosensitivity. And second one, and the other diseases as well, they have mainly related symptoms. So this is the picture that show that how the DNA, that mutation in the DNA affects the next generation. This type of mutation is also seen in certain places where there was a nuclear war, like the Hiroshima and Nagasaki as well. ओके जी, तो आपकी प्रेजेंटेशन अब एंड होती है. आप जो लोग भी प्रेजेंट हैं, आप इनसे क्वेश्चंस वगैरह करें ताकि इनकी मार्क्स कंप्लीट हो सकें. और दूसरा मैं एक चीज़ देखी थी आपकी प्रेजेंटेशन में, आपने जो रेफरेंसेस दिए उसमें ईयर कहीं नहीं लिखा हुआ. तो ईयर क्यों नहीं लिखा इसमें? रेफरेंस देते हुए तो ईयर लिखना चाहिए था ना. रेफरेंस कहीं भी लिखते हैं आप तो उसमें तो आप ईयर हमेशा देते हैं. आपने क्यों नहीं डाला इसमें ईयर? ग्रुप में किसी के भी ज़हन में नहीं बात आई है? क्यों एहतशाम, क्या जवाब देंगे इसका? मैडम वो दूसरा मार्क